Is it? Uh-huh. Okay, we are on live. All right. Good evening, everyone. Good evening, everyone. I would like to welcome you on the behalf of WHRF Yoga Research Study Circle. Today, our speaker for the Series 2, Episode 9 is Suneet ji. She is the post-graduation in food and nutrition and has an experience in working in wellness industries with the country's leading wellness brands for more than 2 decades and running her own consultancy also. She has conducted a presentation with WHRF on the lifestyle modification in life in modern days women. So if you want to watch it, then you can log in the same forum and watch out. So for today, our topic is achieving holistic wellness through diet, yoga, and meditation. So I would like to invite Suneet ji, and I just wish that her experience and her knowledge will enrich us, give us more knowledge how we can give our life and how we can inculcate this diet, yoga, and meditation in our daily routine, and we can get more benefits. So, welcome, Suneet ji. Over to you. Okay. Good evening, everyone. आप सबको मेरा pranam, namaste. It feels really good to be back with WHRF. First and foremost, I would like to thank Neha ji and Rachna ji for organizing this platform WHRF for empowering women to express their views on wellness, health, and also conduct research work on health and wellness. Now, to start with, my topic for today is achieving holistic wellness through nutrition and yoga. So let's understand what is the definition of wellness. So as per World Health Organization, the definition of, second slide please, the definition of wellness is a state of complete mental, physical, and emotional well-being, not merely an absence of disease or infirmity. So the modern day lifestyles are sort of sedentary and also very stressful. So to understand that each one of us is stressed out for time, we are running against time, we are almost in a rat race, and this makes us also vulnerable to a lot of many lifestyle diseases like diabetes, obesity, arthritis, metabolic disturbances, insulin resistance. Young girls are facing this problem of PCOD because of overweight. And so the list goes on, so on and so forth. In fact, to also understand that India is rated to be the diabetic capital of the world in the next 2 to 3 years. So let's also understand that few years back, our ancestors, like our forefathers, our parents and our grandparents, they did not suffer from any of these diseases. They led beautiful, simplistic lives. They were much more peaceful, much more joyful than we are. And they were also they did not lead luxurious lives like us, but they were physically and socially very active. So what is that is leading us to this physical, mental, and emotional disturbances? Next slide, please.
So the contributors to wellness are four, which lead to physical, emotional, and mental wellness. The first and foremost is nutrition. Second is exercise, meditation and breath work, and sleep. So let's go on to the first one, that is nutrition. Next slide, please. So here I have showed a food pyramid, which is what is good nutrition. Good nutrition is about a balanced, healthy, and a wholesome diet. Now, National Institute of Nutrition and ICMR, Indian Council of Medical Research, have these guidelines through this pyramid for a healthy diet. So I have just shown this pyramid where there are different food groups and the quantities of these food groups which have to be included in your diet. So to start with, the first one is fruit and vegetable. Next slide, please. Next slide, please. I have also shown you a food plate for the day, which is being demonstrated by Indian Council of Medical Research in association with NIN. Anyone wanting to go more deeper into this can log into NIN site and see it. Let's go on to the fruit and vegetable group. Next slide, please. Now, this is a group which has to be eaten liberally. Like, why should it be eaten liberally? Because it is a rich source of vitamins, minerals, micronutrients, phytonutrients, antioxidants, and fiber. During the pandemic, we all have been seeing that how important antioxidants and phytonutrients were talked about by the medical fraternity. So their importance is due to the few reasons. Let me describe to you all what are the reasons. सबसे पहले, these are protective foods. ये हमें disease के against protect करते हैं, हमारा immunity power improve करते हैं. Fruits and vegetable एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हमें 9 वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, और ये विटामिन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, इन्हें हमें रोज खाना है. दे हैव टू बी ईटन रेगुलरली. सो टू अंडरस्टैंड, देयर आर दीज विटामिन B1, B2, B6, B12 to 9 ऐसे, thiamine, biotin. These are the vitamins which are so what is important is that we should be eating fruits and vegetables every day in our diet. Fruits जो हैं should be consumed preferably during the morning hours, because morning hours में हमारा digestive system is at its peak and our body has the capacity to digest these fruits and also cleanse our system. It also prepares our gut for receiving the nutrients from other sources of food. Also always remember कि अपने fruits को mix करके ना खाइए, एक टाइम पे एक ही fruit खाइए. हर एक fruit का digestive time अलग होता है, तो जब हम इकट्ठे खाने लगते हैं, then we are overburdening our digestive system. So it is always recommended to eat one fruit at a time. Next, let's go on to the next slide, please. दूसरा नेक्स्ट फूड ग्रुप है सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, लेग्यूम्स एंड बीन्स. नो, ये जो है सीरियल्स जो है हमारे इंडियन डाइट का एक स्टेपल हिस्सा है. अक्रॉस द कंट्री व्हीट और राइस जो है खाया जाता है. दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल्सो फाइबर. बट इन द प्रेजेंट टाइम्स हमने देखा है कि लोगों को बहुत सी व्हीट के साथ ग्लूटेन एलर्जीज हो रही हैं. सो मिलेट is found a comeback into our diets. Millets जो है हमारी ancient diets का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, because they were but during the 1970s जब ये cereals और rice हमारी country में आए,
तो ये मिलेट्स थोड़ी बैक सीट ले गए। मगर आज आई थिंक रिसर्चर्स हैव रियलाइज्ड दैट मिलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके एक तो ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, दूसरा दे हैव insoluble fiber, they have low glycemic index, and they also have diabetes lowering properties. So low glycemic index से क्या होता है कि इनके अंदर ग्लूकोज रिलीज बहुत धीरे होता है, एंड सो आपके ब्लड में शुगर स्पाइक्स नहीं होते। यू आर बेसिकली दे आर डाइजेस्टेड स्लोली एंड स्टेडली, आपको एकदम से भूख नहीं लगती। सो दे हैव diabetes lowering properties, and they also have another advantage, that is कि ये obesity में, weight gain में आपको help करते हैं। ये आपको जो भी लोग weight loss diets पे हैं उनके लिए बहुत अच्छा resource है to eat. Now coming to pulses, legumes, बीन्स, हमारी इंडियन डाइट्स जो हैं ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट्स हैं, और इन डाइट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है पल्सेस, लेग्यूम्स एंड बीन्स का। और ये दीज आर आल्सो प्रोटीन रिच एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सो एक चीज हमेशा याद रखिए कि इनके अंदर इन सब के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में अपने आप मैन्युफैक्चर नहीं होते, डाइट के द्वारा मिलते हैं। बट जो आपके पल्सेस, लेग्यूम्स एंड बीन्स हैं उनके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स गुड क्वालिटी के पूरे नहीं होते। बट हम सीरियल और जैसे हम दाल और चावल, इंडियन डाइट में दाल और चावल खाई जाती है, रोटी और सब्जी खाई जाती है। तो जब हम इनको लाइक रोटी एंड दाल खाई जाती है सब, सो जब हम पल्सेस, लेग्यूम्स एंड बीन्स को सीरियल्स के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट इम्प्रूव्स। Another one good takeaway is कि आप ये pulses, legumes, beans को कभी भी भिगो के बनाइए, जैसे राजमा, काला चना, इन सब को ओवरनाइट भिगोएं, और दालों को भी 3 से 4 घंटा जरूर भिगोएं, क्योंकि इनके अंदर दे आर डाइकोटिलिडन्स इन नेचर। इनके अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड इंटरफियर्स विद द डाइजेशन. So when you have these pulses, आप इनको भिगो के रखते हैं तो फाइटिक एसिड पानी के अंदर लीच आउट हो जाता है। Once it is leached out inside the water, then what happens is that आपकी बॉडी में वो नहीं जाता और आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। Phytic acid interferes with nutrient absorption. So always remember to कि दालों को और जितने भी ये साबुत वाली चीजें हैं इनको भिगोइए। मिलेट्स के अंदर तकरीबन 10 times ज्यादा फाइबर होता है compared to rice and wheat. So always try to include millets in your diet. Next slide, please. Reena, can you switch over me to the thing? I'm not seeing myself on the picture. Next slide, please. Okay. Next जो group है वो है meat, eggs, fish, poultry, milk and milk products. Now this is also an energy yielding group. इसके अंदर भी proteins अच्छे होते हैं and it should be eaten moderately. बहुत ज्यादा ना खाएं ये group. Milk and eggs are complete food in themselves. लस्सी, छाछ, yogurt जो vegetarians हैं वो जरूर include कीजिए अपनी diet में, because it is a good source of probiotic bacteria in your gut. Probiotic bacteria जो है आपके gut के gut friendly bacteria को बढ़ाता है. So that helps in digestion. Now next coming over to अगर plant based milk
many people are also developing milk allergies because of lactose intolerance. और दो proteins होते हैं मिल्क के अंदर, एक casein और एक whey protein, उससे भी allergies हो रही हैं. So the best alternative is to switch over to plant-based milks like say sesame milk, आपका almond milk हो गया, peanut milk हो गया. Red meats and organ meat should be totally avoided in your diet because they are very high in cholesterol. And seafood is a rich source of polyunsaturated fatty acids and omega-3 fatty acids. So non-vegetarians should include fish in their diet at least 2 times in a week. This group should be consumed in moderation only, and always try to pair them with vegetables and cereals. Next slide, please. Next is also an energy yielding group. इस ग्रुप से भी आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है. 1 ग्राम ऑफ फैट जब आप लेते हैं तो आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं, और 1 चम्मच जैसे हम ऑयल का लें तो हमें 45 कैलोरीज मिल जाती हैं. तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर में जितने जने हैं पर पर्सन हम अराउंड 25 ml of oil ही यूज करें. We should not be using more than that because that can again lead to obesity and other problems. Now, another important factor is fats and oils अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, because these fats and oils जो हैं they are very good for fats, मतलब they help in absorption of fat soluble vitamins. 4 विटामिन्स हैं A, D, E and K जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, and they are absorbed through the fats. So do not go on fat-free diets. Nuts and seeds are also rich in omega-3 and omega-6 fatty acids. So handful of nuts रोज खाएं आप. You should consume locally grown and locally sourced सीड ऑयल्स, जैसे सेसमी ऑयल हुआ, पीनट ऑयल हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ. लाइक हम नॉर्थ इंडिया में जाएं तो हमें मस्टर्ड ऑयल बहुत यूज होगा, साउथ इंडिया में जाएं कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल टुवर्ड्स द वेस्टर्न इंडिया. सो दीज आर लोकली सोर्स्ड सीड ऑयल्स, मतलब ये लोकली सोर्स सीड से बनते हैं. और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कच्ची घानी का तेल यूज करें, बुल ड्रिवन ऑयल्स या जिन्हें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स कहते हैं. इनके अंदर आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स लूज नहीं होते, दे स्टे इन योर ये आपके सॉरी Okay, so they ये vitamins, you don't lose vitamins and minerals, ये आपके फूड में रहते हैं. whereas जो इंडस्ट्रियल ऑयल्स हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, उसकी वजह से विटामिन्स एंड मिनरल लॉसेस हो जाते हैं, एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, now coming to highly processed junk food, which is high in sugar and salt. So this is a very important group. We all should understand this group. इसके एक तो है कि ये जो processed junk food है, instant food है, ready to eat food है, this is very rich in refined flour, मैदा जिसे कहते हैं, जिसके अंदर से आप वो छान निकाल दिया जाता है. सॉल्ट में बहुत हाई होता है, शुगर में बहुत हाई होता है, अनहेल्दी फैट्स होते हैं इसके अंदर. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इनके अंदर शुगर बहुत होती है. सो लेट्स सी दैट व्हाट हैपेंस जब हमारी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी गो अप. So let's take an example of a Pepsi bottle. तो क्या होता है कि हम एक पेप्सी पीते हैं तो हमें ऑलमोस्ट अराउंड 40 grams of sugar मिलता है, which is equivalent to 20 grams of glucose. So आपके ब्लड में सडनली दैट 20 grams of glucose का रश आ जाता है. At any given point of time, हमारी बॉडी में around 6 to 7 liters of
ब्लड है और हर एक लीटर ऑफ ब्लड को केवल 1 ग्राम ग्लूकोज चाहिए। तो आप सोचो कितना ग्लूकोज ज्यादा हम पंप करते जाते हैं। तो जब हम एक्सेस ग्लूकोज पंप करते जाते हैं अपनी बॉडी में, तो क्या होता है कि पैनक्रियाज जो है वो एक्टिव होते हैं और फटाफट इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। नाउ इंसुलिन यूजेस अप द ग्लूकोज, है ना। सो एक इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा, जो पैनक्रियाज है, और इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है ग्लूकोज यूटिलाइज करने के लिए। मगर जब हम बहुत ऐसे प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड खाते हैं, या हम बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो खूब ज्यादा ग्लूकोज रश होता जाता है और आपका इंसुलिन बार बार, पैनक्रियास को बार बार काम करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपके पैनक्रियास के ऊपर बर्डन पड़ता है एंड पैनक्रियास स्टार्ट्स माल फंक्शनिंग। दैट इज द रीजन कि लोगों को ओबेसिटी आजकल बहुत हो रही है एंड ऑल्सो डायबिटीज बहुत हो रही है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे इज कि ये प्रोसेस्ड फूड जो है ये आपको इट लीड्स टू ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो ये वाले फूड जो भी ओबेसिटी से डील कर रहे हैं या डायबिटीज से डील कर रहे हैं, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे शुड स्टॉप दिस हाईली प्रोसेस्ड जंक फूड। और एक और इनका बहुत नुकसान ये है कि इन जंक फूड के अंदर एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। जैसे आप देखो मैगी नूडल्स हो गए, तो आप मैगी नूडल्स बच्चों को देना शुरू करते हैं, उनके सैशेज जो होते हैं उनके अंदर एडिक्टिव मटेरियल होता है, तो बच्चों को रोज रोज मैगी खाने के चस्का पड़ता है। सो दीज एडिक्टिव जो चीजें हैं दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो यू शुड नॉट बी ईटिंग again, so the point is that processed food को, junk food को कम कीजिए अपनी डाइट में। So these foods are tempting and addictive और हमारे टेस्ट बड्स को ऑल्टर कर देते हैं। हम छोटे से बच्चे को ना पेप्सी पिलाते हैं बड़ी खुशी से, और फिर देखते हैं कि वो बच्चा तो बिकॉज उसकी टेस्ट बड पे शुगर की लत लग गई, तो वो हमेशा पेप्सी मांगेगा। सो बचपन से ये यूज करें कि अपने बच्चों को ये प्रोसेस्ड फूड की आदत ना डालें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So there are a few takeaways for all of you. Monitor the portion sizes. हमारी नानी दादी जब खाना बनाती थी ना, तो मुट्ठी के हिसाब से बनाती थी। अगर 5 मेंबर हैं तो 5 मुट्ठी राइस भिगोए जाते थे। तो आज के दिन में मेजरिंग कप्स आ गए हैं। यूज मेजरिंग कप्स फॉर मेजरिंग जब भी आप खाना बनाने जाएं, एंड ऑल्सो यूज स्पून्स, स्मॉलर स्पून्स टू ईट एंड टू च्यू, एंड ज्यादा देर तक खाने को चबाएं। सो इससे क्या होएगा कि आप ओवर ईट नहीं करोगे। एंड अनदर थिंग इज कि फूड्स विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, use cold pressed oils and do not refry oils. Refrying of oils is very bad because इनसे एक जब हम refry करते हैं तो एक फैटी एसिड रिलीज होता है जिसको कहते हैं ट्रांस फैटी एसिड। नाउ ट्रांस फैट्स जो हैं, एक तो ये कार्सिनोजेनिक हैं, हार्ट के लिए बहुत खराब हैं, और ये एक एलिमेंट रिलीज करते हैं विच जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स हमारे एजिंग प्रोसेस को भी इंक्रीज करते हैं। एंड ऑल्सो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, वनस्पति ऑयल्स को ना खाएं, बिकॉज वनस्पति ऑयल्स आर अगेन रिच इन सैचुरेटेड फैट्स, और ये जो प्रोसेस्ड फूड है, कैलोरी डेंस फूड है, इसके अंदर वनस्पति हाई होता है। सो माय टोटल टेक अवे हियर वुड बी कि आप अपना जो हमारी एक इंडियन डाइट है ना, अक्रॉस द कंट्री, मतलब साउथ इंडिया में डोसा इडली हो गया, या नॉर्थ इंडिया में मिस्सी रोटी एंड अच्छी हरी सब्जियां हो गई, तो अक्रॉस द कंट्री हमारे डाइट्स आर वेरी हेल्दी। हमारे जो पूर्वज थे, आई थिंक उन्हें न्यूट्रिशन का काफी अच्छा सेंस था, तो उन्होंने बहुत अच्छा डाइटरी प्लेटफॉर्म दिया है हमें। सो कम बैक टू योर इंडियन हेल्दी डाइट्स। ये जो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड को छोड़ने की कोशिश करें, दैट विल
keep you healthy. You will be able to fight obesity, diabetes, and all the other lifestyle diseases. Next, let's move on to the next slide. So now coming to emotional and mental wellness. Emotional and mental wellness are the two important factors for a holistic wellness. So इसमें हमारे पूर्वज हमारे लिए एक योगा इतनी अच्छी चीज छोड़ गए हैं इन हमारे लिए धरोहर के फॉर्म में. और योगा को हम एक दिन में नहीं सीख सकते. योगा हैज टू बी practiced and practiced and practiced. Once you start practicing the two limbs of yoga, meditation and breath work, तो आपके emotional and mental illnesses बिल्कुल क्योर हो जाएंगी. आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा. सो हमारी धरोहर में मिली हुई ये चीजें हैं. हमें मेडिटेशन से क्या होता है, ध्यान से क्या होता है कि यू स्टार्ट इंटरनलाइजिंग. आप अपनी कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हो. आपको यू स्टार्ट रियलाइजिंग. सी आपके इन अ डे वी क्रिएट अराउंड 40,000 थॉट्स. नाउ जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो ये थॉट्स, नंबर ऑफ थॉट्स धीरे धीरे डिक्रीज होती हैं. एंड जब ये नंबर ऑफ थॉट्स, तो हमारा माइंड जो होता है ना क्लटर्ड होता है, फालतू में सोचते रहते हैं जिसकी जरूरत नहीं है. सो हमारा माइंड क्या करता है कि ये जो वेस्ट थॉट्स हैं उनको बंद करता है, एलिवेटेड थॉट्स को लेके आता है. तो आप क्या होता है कि यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू स्टार्ट एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग. जो कॉन्सेंट्रेशन और फोकस है ना, हम बच्चों को कहते हैं कि फोकस अच्छा होना चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए. That is achieved through meditation. So it's such a wonderful tool. I would want everyone to practice this. Breath work से क्या होता है कि हम अपनी breath के ऊपर कमांड, मतलब हम जब बैठते हैं और प्राणायाम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये प्राण शक्ति ही सारी शक्ति है और हर इंसान को ईश्वर ने इक्वल अमाउंट में दी है. इसे हम कितना टैप कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है. एंड वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, यू ऑल्सो स्टार्ट कंट्रोलिंग ऑन योर माइंड. यू स्टार्ट बिकमिंग हैप्पियर इनसाइड. आपको ये जो लग्जरी वाली चीजें हैं ना कि मुझे आज ये गैजेट नया आ गया तो वो चाहिए या वो नई कार चाहिए, वो फिर आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता. यू अचीव दैट हैप्पीनेस within yourself. So my request to everyone would be to practice this. And I would say that when you mind your mind, you manage your wellness and illness both. So this is which is very, very important. Next slide, please. Now coming to holistic wellness. Holistic wellness जो है कोई एक चीज से नहीं अचीव हो सकती. So it has to be an amalgamation of physical, emotional and mental. Physical तो हम समझे कि हमें न्यूट्रिशन से, एक्सरसाइज से और प्रॉपर स्लीप पैटर्न से. मतलब ये भी हमारे पूर्वज जो हमें सिखा गए कि अमृत वेले में उठिए, लाइक सूर्य नमस्कार अमृत वेले में किया जाता है. सो वो वही पैटर्न फॉलो कीजिए कि अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. एक्सरसाइज जरूर अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए. एक्सरसाइज इन एनी विच फॉर्म. Then emotional wellness also is achieved through your breathing and breathing exercises and nutrition. And mental wellness is achieved through meditation, breathing, and being socially active. When you start meditating, you also realize that your जो I से V में move करते हो आप, मतलब I is illness and V is wellness. तो आप सोशली एक्टिव होने लगते हो, आपको ज्यादा लोगों से मिलता है. और ये हमेशा याद रखें कि अपने फ्रेंड्स से जरूर मिलें, फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्टिव सेशंस करें. फैमिली
टुगेदर खाना खाएं, मतलब सोशली मीन्स जहां भी हम जब मिल के कोई काम करते हैं, that is being socially active. So this is what is about holistic wellness. I think each one of us can achieve this through our beautiful balanced diets and through meditation and pranayam. Next slide, please. Next slide. So I would end up by saying that as I change my thoughts, the world around me changes, है ना? तो अपनी thoughts को change करें, positive करें और ये सब चीजें practice करें, सब कुछ achieve कर पाएंगे. कोई चीज जिंदगी में ऐसी नहीं है जो हम achieve ना कर पाएं. Thank you very much. And it was a pleasure coming back on the same forum, WHRF. Few months back, I had presented a presentation on the modern day women and their lives. So any one of you who has not watched it, or the new viewers, can log in on the same platform and watch that. Thank you very much. Any questions, please? Thank you, Suneet ji. So we have, I think, 2 questions here. So first, Meenu ji, if you want to ask some question, please unmute yourself and you can. हाँ, थैंक यू मैम. आपने बहुत ही अच्छा से सब कुछ क्लियर कर दिया है. कुछ छोटा सा डाउट्स हैं मेरे पास. मैम एक्चुअली जो अचार में ज्यादातर ऑयल होता है, नमक ज्यादा होता है, साल्ट ज्यादा होता है, तो क्या हम अचार को अवॉइड करें या क्या करें? नहीं बेटा, you should definitely नहीं, पिकल्स जरूर खाने चाहिए. हमारी कंट्री में अक्रॉस द कंट्री आप देखो, पिकलिंग जो है ना बहुत पुराना धरोहर है हमारे पास. सो पिकलिंग से क्या होता है, फायदा क्या होता है कि पिकल्स के अंदर आप क्या चीजें यूज करते हो. आप खट्टी चीजें ना, आम का पिकल बनेगा, नींबू का बनेगा, आंवले का बनेगा, आपका टमाटर का बनेगा. तो ये जितनी खट्टी चीजें होती है ना, इनके अंदर विटामिन सी लेवल्स, और जैसे इमली में टार्टरिक एसिड होता है, आपके आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड होता है. तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं और दे आर वेरी हाई सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स हमें क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को दे हेल्प अस इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस, है ना. और इनके अंदर हम जो मसाले डालते हैं ना, अदरक, लहसुन, आपका जीरा, मेथी दाना, वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रिच सोर्स है. और इनको जब ऑयल्स में हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद बनते हैं. सो पिकल्स जो है ना, हैव टू बी ईटन लाइक पिकल्स. उनको खाने की तरह ना खाएं. मतलब जब हम खाना खाते हैं अपनी प्लेट में, तो 1 चम्मच, आधा चम्मच पिकल, ये हमारी एपिटाइट को बढ़ाता है. मतलब हमें भूख एकदम, कई बार हम कहते हैं ना भूख नहीं लग रही तो नींबू का अचार खाओ, है ना. सो पिकल्स जरूर खाएं, बट पिकल्स की तरह खाएं, खाने की तरह ना खाएं, है ना. और पिकल्स को हमेशा ग्लास बॉटल्स में प्रिजर्व करें या वुडन बॉटल्स में प्रिजर्व करें, ठीक है. नॉट इन प्लास्टिक बॉटल्स. प्लास्टिक बॉटल्स में नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो अगेन अनहेल्दी होते हैं, वो लीच आउट हो जाते हैं उनके अंदर. या ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. Welcome. Anything else? Thank you, Suneet ji. Hello, So we ma'am. have 2 more questions. Okay. Pratima ji is here and I would like. Hello everyone. मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम आजकल फ्लैक्सीड को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं. मैम व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फ्लैक्सीड? ओके, सबसे पहले तो फ्लेक्सीड्स है ना बेटा, सबसे अच्छा सोर्स है फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. वेजिटेरियंस के लिए हमारी इंडियन डाइट्स, बहुत लोग वेजिटेरियंस हैं,
तो उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ्लेक्सीड से मिलते हैं, है ना। और फ्लेक्सीड ऑयल भी आजकल मिलता है, बट फ्लेक्सीड ऑयल को आप कुकिंग में मत यूज कीजिए। फ्लेक्सीड ऑयल का फायदा ये होता है कि एक तो ये हार्ट हेल्दी होते हैं, आपके लो डेंसिटी लिपिड्स हैं जो हार्ट के लिए फायदेमंद नहीं है, ये इनको कम करते हैं और हाई डेंसिटी लिपिड्स को बढ़ाते हैं। सो यू शुड टेक फ्लेक्सीड्स, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो फ्लेक्सीड्स को आप इनको क्या करते हैं, मिक्सी में ग्राइंड करके योगर्ट में या आप अपने सैलेड्स के ऊपर डाल के इनको खाएं ना, बिकॉज दैट इज द वे टू यूज फ्लेक्सीड्स, बट यू शुड डेफिनेटली यूज फ्लेक्सीड्स, और वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, नमस्ते सुनीत जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। बहुत ही बढ़िया फ्रूटफुल रहा आपका सेशन। मेरे एक क्वेश्चन है, विच मिलेट शुड बी फॉर डेली डाइट में होनी चाहिए? हाँ जी, बेटा मिलेट्स जो है ना, देखिए एक तो हमें मिलेट्स मालूम है जो चार या 5 मिलेट्स हैं आपका, रागी, जवार, बाजरा, राजगिरा, है ना। सो ये तो हमें सबको पता है, ये तो आपको जरूर इंक्लूड करने चाहिए। 5 और सिरिधान्या मिलेट्स हैं जिनके नाम है फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, कोडो मिलेट, है ना। सो इनको भी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सो मिलेट्स जो हैं इंडियन डाइट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता, मतलब आप देखो गांव में अभी भी जाओ तो जवार की रोटी, बाजरे की रोटी खाई जाती है ना, लहसुन की चटनी से खाई जाती है। तो मगर अभी क्या हुआ, कुछ पिछले सालों से ये मिलेट्स हमारे यहाँ से मतलब निकल गए हमारी डाइट्स में से, बट अभी ये वापस आ रहे हैं और इनको जरूर ये जवार, बाजरा, रागी और राजगिरा ये तो जरूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। Okay, thank you so much for your fruitful information. Thank you so much. This will help for everyone. Thank you so much. Thank you. On behalf of Women Health Research Foundation, I extend my heartiest vote of thanks to our today's speaker, Mrs. Suneet Kaur ji, who spared her precious time to throw light on the importance of holistic wellness through diet, yoga, and meditation. Today we had an opportunity to hear your thoughts, Suneet ji, and I'm sure this will surely encourage us to work for holistic wellness for betterment of our life. Thank you very much, Suneet ji. Thank you, Gitanjali. Thank you so much. Thank you.